Let's start one-liners of सेक्शन बी. सबसे पहले गुडविल चैप्टर का वन लाइनर होता है व्हाट इज गुडविल. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, 2 बार रिपीट हो चुका है, राइट. व्हाट इज गुडविल? तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म. करेक्ट. इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ ना लिखने से तो अच्छा है. Goodwill is the value of reputation of the firm. Correct. इतना लिखोगे तो भी चलेगा, but if you want best in respect of profit earning over and above expected profit. Next, what is revaluation of goodwill? Now, at the time of reconstitution of partnership firm, that is change in profit and loss ratio, admission of a partner, retirement or death of a partner, goodwill is revalued. This is called revaluation of goodwill. So reconstitution of partnership firm, important word है. करेक्ट. रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया, चेंज इन पीएल रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ. नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल? नाउ गुडविल इज एन इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट. ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है. गुडविल इज एन इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 बार आ चुका है, 2020 में, 2021 में. अंडर व्हिच हेड गुडविल इज शोन इन बैलेंस शीट? तो आपने ये कंपनी फाइनल अकाउंट्स किया है. Goodwill is shown in balance sheet under main head non-current assets and sub-head intangible fixed assets on asset side. तो non-current assets में sub-head intangible fixed assets. Next, what is capitalized profit? Now, capitalized value of average profit. Capitalized value of average profit on the basis of expected rate of return is called capitalized profit. अब मान लीजिए ये मुझे याद नहीं पड़ रहा है, तो आप सिर्फ इतना लिखोगे capitalized profit is average profit divided by expected rate of return into 100, तो भी absolutely valid है 1 मार्क के लिए. मान लीजिए दोनों लिखते हो तो बेस्ट है, पर आप ये नहीं लिख पाते सर, लर्न नहीं होता है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट. नहीं होता है तो फॉर्मूला तो लर्न होता है भाई, ये तो समझ में भी किया है. डू दैट, राइट दैट. Average profit upon expected rate of return into 100. That's it. What is super profit? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है. Excess of average profit over expected profit is called super profit. फिर super profit का फॉर्मूला लिख दो, average profit minus expected profit. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, what is super profit, right? What is average profit? Total profit of given years divided by number of years is called as average profit. तो total profit divided by number of years. So average profit क्या होता है? Total profit divided by number of years. What is weighted average profit? Average profit arrived after giving weightage to different years. Profit is called weighted average profit. आप weightage देते हो different years को. अब इसमें एक बात जरूर लिखना, more weight is given to recent years profit. More weight is given to recent years profit. Full stop यहाँ पे भी कर सकते हैं, और अगर elaborate करना है, and less weight is given to the profit of the past years, previous years. तो recent profits को more weight दिया जाता है. इसमें से ये वन लाइनर है, MCQ भी आ सकता है कि more weight is given to recent years profit. What is weighted average profit में से? ठीक है. Average profit arrived after giving weights to different years profit is called weighted average profit. तो ये थे गुडविल के वन लाइनर्स. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब ये व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 3 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है. करेक्ट. नाउ इसका आंसर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस चेंजेस इन पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू कार, CAR, कार. C for changes in profit and loss ratio, A for admission of a new partner, R for retirement or death of existing partner. तो changes in partnership due to car, changes in partnership due to car, CAR, change in P&L ratio, admission of new partner, retirement or death of existing partner is called reconstruction of partnership firm. What is revaluation account? Revaluation account क्या होता है? An account prepared to record changes in the value of assets and liabilities at the time of reconstruction of partnership firm.
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज चेंज होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। एन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, टू रिकॉर्ड द चेंजेस, चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए, राइट, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? अब मेहरबानी करके इसमें फॉर्मूला मत लिखना। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो लिखोगे तो हाफ मार्क मिलेगी, पर जो 100 और 100 एम कर रहा है वो फॉर्मूला नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। देखिए मार्च 2018 में क्या पूछा है, व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो आप जब सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं तो हाफ मार्क मिलेगी डेफिनेटली, बट फुल नहीं मिलेगी। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो में आपको एक ही लाइन लिखनी है, रिड्यूस्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, reduced share of profit due to changes in profit and loss ratio is called sacrifice ratio. तो reduced share of profit due to changes in profit and loss ratio, how it is calculated, तो फॉर्मूला लिखना है old ratio minus new ratio. Is that clear? reduced share of profit वो एक्सपेक्ट करता है हमसे बोर्ड वाला, due to changes in profit and loss ratio is called sacrifice ratio. what is gain ratio? अब फॉर्मूला लिख कर आओगे न्यू माइनस ओल्ड तो मिलेगा हाफ मार्क, बट व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, increased share of profit, increased share of profit due to changes in profit and loss ratio is called as gain ratio. gain ratio का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो याद रखना व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो बोर्ड में हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और व्हाट इज गेन रेशियो बोर्ड में हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज गेन रेशियो, इंक्रीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने के कारण जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है उस इंक्रीज को गेन रेशियो कहते हैं। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर 100 और 100 चाहिए तो ये लिखना है, ओके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। नेक्स्ट, इन व्हिच अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर्ड? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कहां ट्रांसफर होता है, 2023 में आ चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट in case of fixed capital method and capital account in case of fluctuating. तो फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट बनता है, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल, राइट? नेक्स्ट, at which value assets and liabilities are shown in balance sheet after revaluation? तो revalued figures, after revaluation assets and liabilities are shown at revalued figures, revalued figures पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, what is the other name of revaluation account? Now the other name of revaluation account is profit and loss adjustment account. The other name of revaluation account is profit and loss adjustment account. ये important है, correct? बहुत बार रिपीट हुआ है, other name of revaluation account. Now 2 बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, when revaluation account is debited, when revaluation account is debited. Now when there is upward revaluation in liabilities, liabilities बढ़ गई, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इन एसेट्स, एसेट्स कम हो गए। लायबिलिटी के बढ़ने पर लॉस होता है, एसेट्स के रिड्यूस होने पर भी लॉस होता है, और लॉस होने के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये 2 बार बोर्ड में आ चुका है, व्हेन देयर इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन लायबिलिटीज और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इन एसेट्स। नेक्स्ट, नाउ चैप्टर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टेट एनी 2 राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर 2020 में आ चुका है। तो टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, टू टेक पार्ट इन बिजनेस, करेक्ट, टू टेक बिजनेस डिसीजंस। तो 2 राइट्स लिखने आपने लिख लिए। फॉर व्हाट पर्पस अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, 2 कोई भी लिख सकते हैं, ये 2023 में आया है। फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल, फर्म नीड्स एडिशनल मैनेजरेबिलिटी, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, टू रिटेन स्किल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। तो इन 4 में से कोई भी 2 लिखोगे तो चलेगा। एडिशनल कैपिटल चाहिए, मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉय को रिटेन करना है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इन कारण के लिए हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। ना रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस बार पक्का आएगा, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। द सर्कमस्टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
A, as per Indian Partnership Act 1932. B, voluntary retirement of partner due to personal reason. तो as per Partnership Act 1932, दूसरा voluntary retirement due to personal reason. तो ये most important question है, ये आ सकता है इस बार, right? Circumstances of retirement of partners. तो as per Indian Partnership Act 1932 और voluntary retirement due to personal reasons. Which important accounting aspects are considered at the time of retirement or death of the partner? कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं? तो चार में से कोई भी दो लिखें तो अच्छा है. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो या गेन रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. इन चार में से कोई भी दो, राइट? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड गेन रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, revaluation of assets and liabilities, distribution of accumulated reserves and undistributed profits. Next question. Which balances are credited to all partners capital account in their old profit and loss ratio? Credited पूछा है. Answer होगा balance of reserves, credit balance of undistributed profit and loss are credited to all partners in old profit and loss ratio. तो बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स क्रेडिट होते हैं. क्रेडिट बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, ये इंपॉर्टेंट है. व्हिच बैलेंसेस आर डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, राइट? तो डेबिटेड में क्या होगा? डेबिट बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, दे आर डेबिटेड इन ओल्ड रेशियो. तो याद रहे, क्रेडिटेड पूछे तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एंड रिजर्व्स, डेबिट पूछे तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में आ चुका है. जो ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखते हैं. तो ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, याद है? और जर्नल एंट्री भी लिख कर आओगे तो एकदम बेस्ट हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, व्हाटएवर द केस में बी, टू गुडविल. इज दैट क्लियर? अगर मान लो ये नहीं पड़ता है पल्ले, तो सिर्फ जर्नल एंट्री लिख के आओगे तो भी राइट मिलेगा, 1 on 1. ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह रहा है तो जर्नल एंट्री भी लिख कर आओगे तो भी चलेगा. इज दैट क्लियर? एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, इसीलिए आपने ये लैंग्वेज में लिखा है. ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. Next, explain the accounting treatment of the goodwill of the firm valued at the time of retirement. Now, new goodwill पूछ रहा है. अब new goodwill का most important है. Retiring partners share of goodwill is debited to continuing partners capital account. Retiring partner का share निकाला जाता है, 2 arrows B dot R dot, याद है? Gain ratio. Journal entry होती है continuing partners capital account debit to retiring partners capital. कौन से रेशियो में? बेनिफिट रेशियो में. Is that clear? Retiring partner share of goodwill is debited to continuing partners. Continuing partners capital account debit होता है, retiring partners account credit होता है. Next, अब ये most important है, right? 2 बार आ चुका है बोर्ड में, 2018, 2021 में. Who gives the share in goodwill to the retiring or deceased partner? अब आंसर लोगों को लगता है old. नहीं, old नहीं है. Retiring partner share in goodwill is shared by those partners who get benefit of retiring partners profit. जिसको benefit होता है. अगर मान लीजिए आपको benefit नहीं हो रहा है तो आपको goodwill debit नहीं होगा. Retiring partners share in goodwill is debited in continuing partners in gain ratio. Main है retiring partners share in goodwill is shared by those partners who get benefit, not all. Those partners who get benefit of retiring partners share. जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर का बेनिफिट जिन जिनको मिल रहा है वो शेयर करते हैं गुडविल. इज दैट क्लियर? रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल इज शेयर्ड बाय दोज पार्टनर हु गेट बेनिफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन गेन रेशियो. When and why profit and loss adjustment account is prepared? Profit and loss adjustment account is prepared at the time of reconstruction of partnership firm. It is prepared to show net increase or decrease in the value of assets and liabilities. यहाँ लिख सकते हो, it is prepared to show changes in the value of assets and liabilities
at the time of reconstruction. Who gives the share in goodwill to the retiring or deceased partner? Why? Repeat हो रहा है. Now, who gives the share in goodwill to retiring partner and why? To compensate gain in profit, continuing partner give to the retiring partner his share of firm's goodwill. Right? Share of goodwill कौन देता है? Continuing partner, जिनको gain हो रहा है. Why पूछ रहा है? क्योंकि उनको gain होगा फ्यूचर में. राइट, इसीलिए वो टू कंपनसेट गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गिव टू रिटायरिंग पार्टनर हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल. राइट, अब ये बोर्ड में आ चुका है, टेक्स्ट बुक का नहीं है. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एट व्हाट रेट इंटरेस्ट इज पेएबल. अब 2022 में आया है, ये रिपीट हो सकता है. ये वन लाइनर में से उसने एमसीक्यू में से वन लाइनर बनाया है. तो 6% interest at the rate of 6% per annum is payable on unpaid amount payable to retiring partner. MCQ में से वन लाइनर बनाया है. Next, dissolution. Explain the meaning of dissolution of partnership when due to retirement, death or insolvency. Retirement, death or insolvency of partner, business is not closed. It is called dissolution of old partnership. क्योंकि पूछ रहा है dissolution of partnership. When due to retirement, death or insolvency of partner, business is not closed. It is called dissolution of old partnership. अब ये बोर्ड में आ चुका है 2020 में. Dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm. इसका आंसर है when all partners get separated. पहले तो सारे पार्टनर सेपरेट हो जाते हैं. Through dissolution of firm, it brings end of partnership, which is known as dissolution of partnership firm. Correct? Business is closed, assets are sold, and liabilities are paid off. Right? When all partners get separated through dissolution of firm, it brings end of partnership, which is known as dissolution of partnership firm. Business is closed, assets are sold, and liabilities are paid off. Most important. आप देखिए कितनी बार आया है बोर्ड में. 3 बार आ चुका है. 2020, 2021, 2022, 2023 में नहीं आया, 2024 में वापस आएगा. What is voluntary dissolution? Most important. When all partners agreed to dissolve the firm. When all partners agree to dissolve the firm. ये important शब्द है. Partnership firm can be dissolved at any point. It is called as voluntary dissolution. जब सारे पार्टनर एग्री हो कि हमें फर्म बंद करनी है, correct, at any point, it is called voluntary dissolution. Most important. 2 बार आ चुका है. Who has to bear the dissolution expenses at the time of dissolution? Firm. Firm has to bear dissolution expenses at the time of dissolution of firm. Next, how would you deal with the provident fund balance shown in the balance sheet at the time of dissolution? Provident fund को हम realization account के credit side डालते हैं. Provident fund will be transferred to the credit side of realization account at its book value. Credit side of realization account at its book value. On its payment, realization account will be debited and bank account will be credited. जब उसको पे करेंगे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. हाउ वुड यू डील द बैड डेट्स रिटर्न? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार. बैड डेट्स रिटर्न जो प्रीवियसली राइट ऑफ हुए थे वो पैसे मिले हैं. बैड डेट्स रिटर्न विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रिलेशन अकाउंट. बैड डेट्स रिटर्न विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. याद रहे, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, credited to realization account. Debited to bank account, credited to realization account. Meaning of realization account. An account prepared at the time of dissolution to give accounting treatment of disposal of assets and payment of liabilities is known as realization account. An account prepared at the time of dissolution to give accounting treatment of disposal of assets and payment of liabilities. इंपॉर्टेंट है ये भी. ये तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट और रिलेशन अकाउंट. उसमें भी आप लिख सकते हो एन अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज नोन एज रिलेशन अकाउंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो 2 मेथड्स हैं, नॉर्मल डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. नॉर्मल डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. Where will you record the payment of bills payable under the second method? Correct. अब second method में क्या होता है, रिलेशन अकाउंट नहीं बनता है, वो अकाउंट ही मेंटेन रहता है और प्रॉफिट लॉस सिर्फ रिलेशन में जाता है.
अब सेकंड मेथड में इट विल बी रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दैट्स इट। रिलेशन अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट लॉस की एंट्रीज के लिए ही बनता है सेकंड मेथड में, तो इसका आंसर है इट विल बी रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स पेबल अकाउंट बनता है एंड कैश अकाउंट। विच इज द अदर नेम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? अब ये मार्च 2023 में आया है, इसका आंसर नवनीत की बुक में है, गाला की बुक में है, आप चेक कर सकते हैं। अकम्प्लिशमेंट अकाउंट इज द अदर नेम ऑफ realization account. Accomplishment account is the other name of realization account, right? अब शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस के वन लाइनर्स नहीं आते हैं बोर्ड में, पर अब न्यू पेपर स्टाइल में नहीं आ रहे हैं, बट इससे पहले हर साल आते थे। तो मैंने जो बोर्ड में आए हैं वही मैंने बनाए हैं, इसमें टेक्स्ट बुक के नहीं रखे हैं, बोर्ड के सारे लिख लिए हैं। व्हाट इज मेंट बाय शेयर फॉरफीचर 2 बार आ चुका है, तो इस बार भी आ गया तो क्या करेंगे, एटलीस्ट हमें कुछ पढ़ा हुआ होगा तो लिख सकेंगे ना। अ प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स by directors of company is called as share forfeiture. Process of cancellation of shares. What is share forfeiture? A process of cancellation of shares. कौन करता है? By directors of the company is called share forfeiture. Most important. ये सारे बोर्ड में जो आ चुके हैं वही हैं, टेक्स्ट बुक के नहीं है। मे बी टेक्स्ट बुक के होंगे तो अच्छी बात है, पर बोर्ड वाले ही सब लिखे हैं। मिनिमम प्राइस पर शेयर, ये भी उसने क्या किया है, एमसीक्यू में से वन लाइनर। यू नो व्हाट इज द मिनिमम प्राइस? 1 रुपी। कम से कम 1 रुपए का एक शेयर होना चाहिए, तो मिनिमम प्राइस ऑफ शेयर इज 1 रुपी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड वाले ही लिखे हैं मैंने। व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम 2019 में आया है। व्हेन टोटल अमाउंट पेबल बाय द शेयर होल्डर या शेयर सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर ज्यादा सही है, इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। टोटल अमाउंट पेबल इज मोर देन द फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कैपिटल इनकम, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कैपिटल इनकम। When the total amount payable by the share subscriber is more than its face value, total amount is more than its face value, it is called as securities premium. ये हमारी कैपिटल इनकम है। 2018 में पूछा है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। If applications are received for less number of shares than the shares issued, it is known as under subscription. तो less number की applications आती हैं under subscription, more number की applications आती हैं over subscription. If applications are received for more number of shares than the shares issued, जितने शेयर इश्यू करने उससे ज्यादा कहते हैं तो उसको over subscription कहते हैं। That's it. Now we are going for the next chapter, debentures. What is debenture? कागज है, डिबेंचर एक कागज है जो बताता है कि कंपनी ने उधार ली है। कागज है तो नहीं लिखोगे ना। डिबेंचर इज द डॉक्यूमेंट, डिबेंचर इज द डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स डेट ऑफ द कंपनी, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। Debenture is a document that confirms debt of the company. It is an acknowledgement of debt. Who is debenture holder? Investor who gets debenture by giving money to the company or who have purchased it from market. या तो मार्केट से खरीदोगे या कंपनी से खरीदोगे, तो वो इन्वेस्टर को डिबेंचर होल्डर कहते हैं। Investor who gets debenture by giving money to the company or have purchased it from market is known as debenture holder. According to Companies Act 2013, for what duration? अब most important duration 2023 में आया है, 10 years का मैक्सिमम ड्यूरेशन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 years. Company is not allowed to issue debentures having maturity of more than 10 years, max to max 10 years. Full stop. A company engaged in infrastructure project can issue debentures for more than 10 years but not exceeding 30 years. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 30 years, नॉर्मल के लिए 10 years. Under which head security premium reserve appears in the balance sheet, reserves and surplus. It is shown on equity and liability side of balance sheet under the head reserves and surplus, below shareholders fund आप लिख सकते हैं. What is meant by debenture discount? 2 बार आ चुका है बोर्ड में. When a company issues debenture at a price which is less than face value, price less than its face value, it is called डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। हमने इशू प्राइस करी है वो लेस देन फेस वैल्यू है। गिव द प्रोविजन ऑफ राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अब कैसे राइट ऑफ करते हैं? इट शुड बी रिटन ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स। यूजुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L इज यूज्ड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। तो एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स। नहीं पढ़ा होगा तो कुछ भी मन की बात लिख कर आओगे।
ध्यान रहेगी, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इट शुड बी रिटन ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल बट विद इन लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स. यूजुअली इट इज रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L. What is meant by issue of debentures for consideration other than cash? 2020 में आ चुका है. When company issues debentures against purchase of assets like land, building, plant machinery, it is called issue of debentures for consideration other than cash. What is meant by loss on issue of debentures? Premium payable at the time of redemption of debentures, POROD, है ना, premium payable, correct, is loss for the company. Hence, the amount is debited to loss on issue of debentures. Premium payable at the time of redemption of debentures is a loss for company. Hence, that amount is debited to loss on issue of debentures account. What are the arrangements by the company to fulfill the required amount for redemption of debentures? अब redemption of debentures के लिए वो क्या कर सकते हैं? 3 possibilities हैं. Fresh issue of shares या debentures, redemption out of capital, redemption out of profit. 3 चीजें हैं अरेंजमेंट करने के लिए. कौन सी अरेंजमेंट करने के लिए 3 चीजें? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट. ये भी इंपॉर्टेंट है. मार्च 2018, ऑन व्हिच टाइप ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट कूपन इज अटैच्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीट होगा 2024 में. विथ बेयरर डिबेंचर्स इंटरेस्ट कूपन्स आर अटैच्ड. इंटरेस्ट कूपन किसके साथ अटैच्ड होते हैं? बेयरर डिबेंचर्स के साथ. बेयरर डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड होते हैं. एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अब लंप सम पेमेंट एट द फिक्स्ड पीरियड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू शेयर्स. 4 मेथड्स हैं, कोई भी 2 लिखोगे चलेगा, चारों लिख दो तो बेस्ट है. लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड, ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स. मेथड्स, 4 मेथड्स हैं. सिक्योरिटी के हिसाब से डिबेंचर्स का टाइप बताइए. 2 बार आ चुका है, राइट. पैटर्न देखेंगे तो 2-2 साल के बाद रिपीट हो रहे हैं. तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल एनालिसिस 3 बार आ चुका है बोर्ड में, 18, 21, 23, 2-2 साल के गैप पे. After preparation of financial statements, they are rearranged in such a way that they become comparable. Financial statements के बाद हम उनको rearrange करते हैं ताकि वो comparable बने. Different stakeholders take decisions on the basis of such comparable statements, which is called financial statement analysis. तो ये जो comparable statements की मदद से हम लोग जो decision लेते हैं, stakeholders कौन होते हैं? Shareholders, banks, government, correct, debenture holders, creditors. ये जो decision लेते हैं on the basis of these comparable statements, उनको financial statement analysis कहते हैं. Most important है, 3 बार आ चुका है बोर्ड में. Describe the types of financial analysis on the basis of parties. तो on the basis of parties 2 ही हैं, external analysis and internal analysis. फिर on the basis of time, तो on the basis of time में long term analysis and short term analysis, right. Horizontal analysis 2 बार आ चुका है बोर्ड में. The comparison of financial statements of different years is known as horizontal analysis. जब आप 2023 का रिजल्ट कंपेयर करते हो 2022 के रिजल्ट से, तो उसको हम horizontal analysis कहते हैं, राइट. डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर करना. व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस? तो अकाउंटिंग रेशियो याद है. Analysis which compares the performance of different units or department of 1 year with the help of predetermined ratios. Comparison with the help of predetermined ratios. आप 1 लाइन कैसे लिख सकते हो? A comparison of company's performance with predetermined ratio is called as vertical analysis. ये cream answer है. Analysis which compares the performance of different units or department of 1 year with the help of predetermined ratio is called vertical analysis. पर मान लीजिए याद नहीं पड़ता है, तो आप लिखिए the comparison of company's performance with predetermined ratio is called vertical analysis. Correct? What is comparative statement? A statement showing comparison of 2 different years is called as comparative statement. It is known as horizontal analysis. Comparative statements का दूसरा नाम horizontal analysis भी है. What is financial statement? मार्च 2018 में आ चुका है. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड में आ चुके हैं पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो. व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट? तो statement showing comparison of 2 different years is called as comparative statement. It is known as horizontal analysis.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. Let us start chapter 5, accounting ratio. What is ratio? The relationship between two accounting figures expressed mathematically. Figures के बीच में relationship कैसे express होगा? Mathematically. चॉकलेट देकर नहीं, है ना? Relationship express करना है, चॉकलेट देकर नहीं, mathematically. The relationship between two accounting figures expressed mathematically is known as financial ratio. When ratio is useful, ratio helps in summarizing large quantities of financial data. Summarize करता है किसको? Large quantity of financial data and to make qualitative judgment about financial performance. Ratio helps to summarize large quantities of financial data. Summarize large quantities of financial data and to make qualitative judgment about financial performance. Summarize large quantity of financial data. Ratio इसलिए useful होता है. Next, in which forms ratio can be presented? Terms of proportion, in percentage, in times, in fraction, in days, weeks and months. ये बहुत easy है, कर चुके हैं. Cost of goods sold, most important. Cost of goods sold क्या होता है? अब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मत लिखना, लिखते हो तो अच्छी बात है, पर उसके अलावा ये भी लिखना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस. ये टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हाफ मार्क देगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस फुल मार्क्स देगा. The gross profit ratio and the net profit ratio are revenue based ratios. Correct? कौन सा? Now the gross profit and net profit ratio are revenue based ratio और expense based ratio पूछ रहा है, तो भाई वो revenue based है क्योंकि profit से related है. When the changes in stock is positive, अब ये most important है. Correct? When the changes is positive, whether it will be added to the cost of goods sold or deducted. तो याद रहे, positive change in the stock is added to cost of goods sold. Positive change. Change is positive, it is added. Change is negative, it is deducted. Add to add, less to less. Change is positive, added. Change is negative, subtracted. Okay? One illustration of financial expense. Interest on long-term borrowings. Are financial expenses included in determining operating ratio? No. Financial expenses are not included in determining operating ratio. What is indicated by liquidity ratio? Most important, short-term solvency. Liquidity मत लिखना. लिखोगे तो हाफ मार्क मिलेगी, बट लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. लिक्विडिटी रेशियोज क्या बताते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. Will the current ratio increase or decrease when the current assets increase and current liabilities remain unchanged? अब करंट रेशियो बढ़ेगा कि कम होगा? करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा. करंट रेशियो विल इंक्रीज व्हेन द करंट एसेट्स इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज्ड. मान लीजिए करंट एसेट्स बढ़ गए तो रेशियो बढ़ जाएगा. व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड? अब शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड्स टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. Total of equity share capital, preference share capital and reserves and surpluses. What is indicated by interest coverage ratio? This ratio indicates the interest payment capacity of business. Higher the ratio, higher the interest payment capacity of the business and vice versa. तो interest coverage ratio ज्यादा होगा तो अच्छा है. This ratio indicates the interest payment capacity. Next, which is better? अभी देखो मैंने यही बताया था. Out of high interest coverage ratio or low interest coverage ratio? So higher. High interest coverage ratio is better. High interest coverage ratio is better compared to low interest coverage ratio. By which ratio efficiency is measured? Efficiency के लिए हमारे को stock turnover, working capital turnover, debtor turnover and creditor turnover. ये जो turnover ratios है ना, वो सारे efficiency ratios हैं. 2 बार आ चुका है, back to back, 2019-2020. Efficiency ratios: stock turnover, working capital turnover, debtor turnover, creditors turnover. Okay. Profitability ratio: gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, liquidity ratio, current ratio and liquid ratio. In order to arrive the trade receivables, is bad debts reserve deducted? No. Bad debts reserve should not be deducted from debtors to arrive trade receivables. What is liquidity?
अब उसका आंसर है लिक्विडिटी मींस एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. लिक्विडिटी मींस एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. अब ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर बोर्ड में आया है. लिक्विडिटी मींस व्हाट? लिक्विडिटी मींस एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. अब ये भी बोर्ड में आया है, टेक्स्ट बुक में नहीं है. राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट रेशियो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू नो द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन. अब लिक्विडिटी, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो है, तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ही पे करेगा. आप देखिए ये आप मार्च 23 और उससे पहले मार्च 22 सेम को ट्विस्ट करके पूछा है वन लाइनर, पर ये टेक्स्ट बुक में नहीं है. बाय विच रेशियो लिक्विडिटी इज मेजर्ड 2021. अभी लिक्विडिटी पे कितना बेस कर रहे हैं देखो, 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है. तो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो लिक्विडिटी रेशियो से. राइट द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2020 में पूछा है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये सारे बोर्ड में आ चुके हैं पर टेक्स्ट बुक में नहीं है वन लाइनर्स. By which ratio solvency is measured? Solvency के लिए debt to equity, total asset to debt, proprietary ratio, interest coverage ratio. Solvency ratios कौन से हैं? Debt to equity, total asset to debt, proprietary ratio, interest coverage ratio. What is stock turnover ratio? Cost of goods sold upon average stock. Cost of goods sold upon average stock is stock turnover ratio. Now the last chapter, cash flow statement. What is cash flow? Cash flow means receipt and payment of cash and cash equivalent. Most important. What is cash flow? Receipt and payment of cash and cash equivalent. Next, what is cash and cash equivalent? Cash means cash on hand and bank balance. Cash equivalent means highly liquid short-term investments. इतना लिखोगे तो भी चलेगा. Cash means cash on hand and bank balance. Cash equivalent means highly liquid short-term investments. Addition लिखते हो तो अच्छा है, which can be easily converted into cash and are subject to minimum risk. राइट, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश सब्जेक्ट टू मिनिमम रिस्क. ये लिखोगे तो चलेगा, अदरवाइज इतना भी आंसर एक्सेप्टेड है बोर्ड में. नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? Statement showing inflow and outflow of cash and cash equivalent from operating activity, investing activity and financing activity is called cash flow statement. Inflow and outflow of cash बताती है कहां से? Operating activity, investing activity and financing activity. What is operating activity? Operating activity means main activity of business. Operating activity क्या है? Main activity of business to earn income, which is neither investing nor financing. Operating activity कौन सी है? Main activities of business, neither investing nor financing. What is investing activity? Investing activity arises from transactions of asset side of balance sheet. Asset side of balance sheet. It includes purchase and sale of non-current assets. Current assets नहीं, सिर्फ non-current assets. What is financing activity? Financing activities are such activities due to which the size and composition of owner's capital and borrowed capital change. Size and composition of owner's capital and borrowed capital change is called financing activity. Which transactions are always operating activity? Most important. Always operating activity. Salary paid, wages paid, bonus to workers and employees are always operating activities. Which transactions are always investing activities? Purchase of patent, purchase of furniture, etc. are always investing activities. Which transactions are always financing activities? Dividend paid on share capital is always financing activity. Right? Always financing activity. Dividend paid on share capital is always financing activity. Give illustration of such transaction from where two activities are taken place. अब यार ये तो बोर्ड में इस बार आ गया तो बहुत जन अटकने वाले हैं. एक ही एक्टिविटी जो दो जगह आती है ऐसा पूछ रहा है. हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड इंक्लूड्स टू एक्टिविटीज. जब आप कोई एसेट हायर परचेज पे लेते हैं तो उसमें दो एक्टिविटीज हैं. जो प्रिंसिपल रीपे होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो इंटरेस्ट रीपे होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में दो एक्टिविटीज आती हैं. प्रिंसिपल रीपे होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट रीपे होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से बोर्ड में आ सकता है. गिव इलस्ट्रेशंस ऑफ if cash transaction is a cash transaction but not cash flow. So cash deposited in bank and cash withdrawn from bank.
सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स कहाँ दिखाते हैं? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। टू विच एक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज रिकॉर्डेड? मार्च 2022 में आया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भले ये करंट एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, करंट लायबिलिटी, पर फिर भी उसको हम कहाँ दिखाते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फॉर विच एक्टिविटी अंडरराइटिंग कमीशन पेड इज कंसिडर्ड? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडरराइटिंग कमीशन हम देते हैं शेयर्स पर, करेक्ट, ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% वाले का झंझट ना फेस करना पड़े, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अंडरराइटिंग कमीशन पे करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Which activity income tax payment and income tax refund are considered? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रिफंड होना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इनकम टैक्स हम पे करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस पर। इनकम टैक्स पेमेंट, रिफंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गिव इलस्ट्रेशन ऑफ एनी टू ऑपरेटिंग इनकम्स। तो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम टैक्स रिफंड, रिसिप्ट ऑफ कमीशन ऑन रॉयल्टी, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। वेयर एडिशन टू द जनरल रिजर्व रिकॉर्डेड, 2 बार आ चुका है बोर्ड में। It is a non-cash, non-operating transaction, therefore added to profit of current year under operating activity. Non-cash, non-operating transaction है, तो ऐड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होता है। अब डिस्क्राइब वेदर कैश फ्लो वुड इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। करंट एसेट के बढ़ने पर कैश कम हो जाएगा। करंट एसेट्स और कैश का नेगेटिव रिलेशन है, करंट एसेट बढ़ेगा, कैश कम हो जाएगी। डिक्रीज इन करंट एसेट, कैश, करंट एसेट कम हो गया, कैश बढ़ जाएगी। सिंपल है ना। करंट एसेट कम कैसे होता है? स्टॉक बेचने पर करंट एसेट कम हो जाएगा, तो स्टॉक बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश बढ़ जाएगी। डेटर हमारा करंट एसेट है, डेटर ने पेमेंट कर दी, डेटर कम हो गए, तो कैश बढ़ जाएगी, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, सिंपल है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश फ्लो इंक्रीजेस, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश फ्लो डिक्रीजेस। In which activity the received dividend and interest are recorded? Dividend receive हुआ है, interest receive हुआ है, तो ये एक investing activity है, dividend receive हुआ है। In which activity the dividend paid and interest are recorded? Dividend pay कर रहे हो, interest pay कर रहे हो, तो financing activity है। Dividend receive हो रहा है, interest receive हो रहा है, तो investing activity है। Dividend pay कर रहे हो तो financing activity है। Wish you good luck.